So today I am going to discuss how to calculate equilibrium constant for an electrochemical cell with the help of Nernst equation. And any electrochemical cell attains equilibrium after a definite time. At the equilibrium state, when an electrochemical cell attains equilibrium, flow of current is equal to 0. Because at the equilibrium state, cell potential E cell equal to 0. So why cell potential E cell equal to 0 at the equilibrium state? Because at the equilibrium state of a cell, electrode potential of cathode is equal to electrode potential of एनोड. कैथोड एंड एनोड दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है. देन सेल का सेल पोटेंशियल जीरो हो जाता है. और जब सेल का सेल पोटेंशियल जीरो हो जाता है, देन करंट फ्लो ऑल्सो इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट of an electrochemical cell, electrode potential of cathode is equal to electrode potential of एनोड. एनोड एंड कैथोड दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है. देन सेल पोटेंशियल, सेल ईएमएफ, ई सेल इक्वल टू हाउ मेनी? जीरो. When E cell potential E cell equal to 0, then flow of current I in the cell also equal to 0. So now at the equilibrium state, how can we calculate the equilibrium constant for an electrochemical cell? Let us discuss today. To explain about it, let us consider an electrochemical cell. Let us consider Daniell cell. This is the redox reaction which is involving in Daniell cell. This is the overall redox reaction. This is the overall redox reaction which is involving in Daniell cell. Now applying Nernst equation, Nernst equation apply करने से, applying the Nernst equation, and let us consider Daniell cell at the equilibrium state. That means cell potential for this cell is cell equal to 0 and flow of current also equal to 0. Then applying the Nernst equation for this overall redox reaction for the Daniell cell, then E cell equal to E naught cell equal to 0.059. 2 moles of electrons are involving in this redox reaction. During the oxidation 2 mole electron loss होगा, during the reduction 2 mole electron gain होगा. Then n equal to how many? 2 log concentration of product. What are the product? Concentration of zinc ion and concentration of copper atom. Copper atom, it is in pure form, so concentration of copper atom is equal to 0. Then concentration of product, we have to write only concentration of zinc ion divided by concentration of reactant. Zinc is in solid state, so इनका concentration कितना होगा? Unity. Then we have to write only concentration of copper ion. And we are considering here this Daniell cell at equilibrium state. So at equilibrium state, cell potential E cell equal to 0. Then E naught cell equal to minus 0.059 divided by 2 log. This is the ratio of concentration of product to the reactant. In a reversible chemical reaction at the equilibrium state, ratio of concentration of product to the reactant, that is called equilibrium constant, according to our previous concept. Regarding the equilibrium constant, we have discussed in class 11. Equilibrium constants are two types, Kp and Kc. There is a relation between Kp and Kc. Regarding this, we have discussed in class 11 in the equilibrium chapter. So this is the ratio of concentration of product to the reactant. So in place of this we can write Kc. That means this is equal log Kc. So relation को arrange कर देने से minus E naught cell को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ गया, सो माइनस हो गया, माइनस E naught cell 0.059 divided by 2 log Kc. Kc is the equilibrium constant. Then negative sign is cancelled in both sides. Then E naught cell equal to 0.059 divided by 2 log Kc. So this is the relation to find out equilibrium constant Kc for the Daniell cell. So
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करने के लिए देन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करके हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट इक्विलिब्रियम स्टेट फाइंड आउट कर सकता है। सो ये रिलेशन को हम लोग जनरलाइज करने से इन जनरलाइज कर देने से देन ई नॉट सेल is equal to 0.059 divided by n. n is the number of moles of electrons involved in an electrochemical cell log Kc. So this is the general relation to find out the equilibrium constant for an electrochemical cell. So this relation you can apply to find out equilibrium constant Kc for any electrochemical cell. Let us discuss now one more topic of electrochemical cell. Topic is electrochemical cell and Gibbs energy. Regarding Gibbs energy, we have discussed in thermodynamics chapter in class 11. So in an electrochemical cell, chemical energy is converted into electrical energy. In an electrochemical cell, what type of chemical energy converted into electrical energy? Gibbs energy. In an electrochemical cell, Gibbs energy is converted into electrical energy or electricity. Therefore, electrochemical cells are also known as galvanic cells. So, जब एक electrochemical cell Gibbs energy को जब electrical energy में convert करता है, during the conversion, electrochemical cell or galvanic cell definite amount of work done करता है. Or that work done is known as electrical work. That means by an electrochemical cell, by doing electrical work, Gibbs energy is converted into electrical energy or electricity. एक electrochemical cell में Gibbs energy कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है? बाय डूइंग डेफिनिट अमाउंट ऑफ वर्क. डेफिनिट अमाउंट ऑफ वर्क डन करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिब्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क डन करता है, जिनको इलेक्ट्रिकल वर्क बोला जाता है, ड्यूरिंग दैट वर्क डन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कौन सा एनर्जी डिक्रीज होता है? गिब्स एनर्जी डिक्रीज होता है. सो बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंज्यूमिंग गिब्स एनर्जी, by consuming Gibbs energy, electrical energy is produced. So mathematically, when electrical work done by an electrochemical cell, then Gibbs energy of the electrochemical cell decreases. Delta Z change in Gibbs energy. Negative sign signifies here energy decreases, Gibbs energy decreases. So when electrical work done by an electrochemical cell, then Gibbs energy of the electrochemical cell decreases. Why Gibbs energy decreases for an electrochemical cell? Because Gibbs energy is converted into electrical energy. According to first law of thermodynamics, energy neither can be created nor destroyed. It can be converted from one form to the another form. So electrochemical cell is a device in which Gibbs energy is converted into electrical energy or electricity. So electrochemical cell Gibbs energy को electrical energy में convert करने के लिए electrochemical cell definite amount of work done करना पड़ता है, जिसको electrical work बोला जाता है. So जब एक electrochemical cell electrical work done करता है, W electrical work, then Gibbs energy of the cell is decreases. That means minus delta Z equal to W electrical, or delta Z equal to what? Minus W electrical. So how can you find out the electrical work for an electrochemical cell? So electrical work W electrical for an electrochemical cell, we can find out
with the help of this relation. Electrical work for an electrochemical cell equal to product of cell EMF or cell potential of the cell and charges flow through the external wire. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट फ्लो होता है. करंट फ्लो मतलब फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चार्जेस कैरी करता है. सो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रिकल वर्क डन, कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन करेगा फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल को और सेल ईएमएफ को हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ चार्जेस फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल वायर. सपोज थ्रू द एक्सटर्नल वायर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है. कितना मोल इलेक्ट्रॉन? 1 मोल. 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से थ्रू द एक्सटर्नल वायर, देन 1 फेराडेज चार्जेस फ्लो होगा. 1 फेराडे. एंड 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से थ्रू द एक्सटर्नल वायर 2 फेराडे चार्जेस फ्लो होगा. सिमिलरली n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से थ्रू द एक्सटर्नल वायर n into f फेराडे चार्जेस फ्लो होगा. लेट अस कंसीडर in an electrochemical cell n mole electrons are flowing from anode to the cathode, then कितना charges flow होगा? n into f. So let us consider cell potential or cell EMF of an electrochemical cell, E cell. Let us consider nf Faraday charges flows through the external wire n into f. F is the Faraday's constant here. F is Faraday's constant. 1 Faraday, remember it, F is Faraday's constant. 1 Faraday equal to 96500 Coulomb. Coulomb is the SI unit of the charge. So W electrical equal to, then we have E cell, cell potential E cell into N into F. What is F? F is the Faraday's constant. 1 Faraday equal to how many? 96500 Coulomb. Then 2 Faraday equal to 2 into 96500 Coulomb. Or what is small n here? Small n represents the number of moles of electrons are flowing through the external wire. Or E cell is the cell potential. Cell potential for an electrochemical cell we can determine with the help of Nernst equation. Then now the above relation becomes delta Z equal to minus W electrical. So in place of W electrical we can write W electrical, in place of W electrical we can write NF E cell. So finally we have delta Z equal to minus NF E cell. So this is the relation to find out Gibbs energy changes during the chemical reaction in an electrochemical cell. Delta Z we can also write R. R means for the reaction, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पर्टिकुलर एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है. ड्यूरिंग दैट रेडॉक्स रिएक्शन कितना गिब्स एनर्जी चेंज होगा वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फाइंड आउट करने के लिए सो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सेल पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फाइंड आउट करना पड़ेगा. और एफ का वैल्यू ऑलवेज 1 फेराडे इक्वल टू F का वैल्यू हो गया 96500 Coulomb. F is a constant. So at standard state जब सेल ऑपरेट होगा एट स्टैंडर्ड स्टेट में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 298 केल्विन, प्रेशर इज 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन कितना होगा? 1 मोलर. जब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टैंडर्ड स्टेट में ऑपरेट किया जाएगा then Gibbs energy change is known as standard Gibbs energy change delta Z naught equal to minus NF E naught cell. E naught cell is the standard cell potential. So this is the relation to find out standard Gibbs energy change for an electrochemical cell. So this is the standard Gibbs energy change. Not represents here standard Gibbs energy. So standard Gibbs energy change find out करने के लिए then first of all we have to calculate standard cell potential for an electrochemical cell. What is the relation to find out standard cell potential for an electrochemical cell? Standard cell potential equal to standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode.
So these are the topics of electrochemistry chapter. Few topics are deleted by CBSE, जैसे कि बैटरीज टॉपिक, बैटरीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी के बारे में टेक्स्ट बुक में है, जिसको डिलीट किया गया है. फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको डिलीट किया गया है. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. So let us solve now a numerical related to the calculation of equilibrium constant and Gibbs energy changes in an electrochemical cell. This is the question. This is exercise number 3.4 from your textbook. This is question number 1 from exercise 3.4. So you have to read the question from the textbook. This is number is how many? 3.4. So this is the redox reaction which is involving in an electrochemical cell. This is the overall redox reaction. Chromium here oxidize, तो chromium electrode behaves as a anode क्योंकि anode में oxidation होता है. Cadmium is undergoing reduction here, जिसका reduction होता है, that is the cathode. तो cadmium electrode is the cathode here and chromium electrode is the anode. Cathode and anode दोनों का standard reduction potential दिया हुआ है. So cadmium electrode का standard reduction potential minus 0.40 volt and standard reduction potential for chromium electron minus 0.74 volt. Then हम लोग कैलकुलेट करना है standard cell potential for this cell and हम लोग क्या फाइंड आउट करना है standard Gibbs energy change for this redox reaction and we can also determine the equilibrium constant for this electrochemical cell. सो डेल्टा जी नॉट एन के से ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल टू कैलकुलेट करना ही पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. सो लेट अस कैलकुलेट नाउ. So first of all, we have to calculate standard cell potential. To standard cell potential, E naught cell equal to standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode. Cadmium electrode is the cathode and chromium electrode is the anode. ये दोनों इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है. इनके लिए माइनस 0.40, इनका कितना है माइनस 0.74. ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, सो ये माइनस क्या इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट. सो प्लस 0.34 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द delta Z naught for this for the reaction. So this is the reaction, this is the redox reaction, this is given in the question. For this reaction we have to find out the delta Z naught, standard Gibbs energy change. So this is the relation to find out standard Gibbs energy change. We have already derived it. So delta Z naught equal to minus NF E naught cell. N is the number of moles of electron involved in this redox reaction. So N equal to कितना, n इक्वल टू कितना होगा यहाँ, ये चार्जेस कंपेयर करो. 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, मतलब n इक्वल टू 6. यहाँ भी 6 है, देखो 3 इंटू 2 हाउ मेनी, n इक्वल टू 6. दैट मीन्स n इक्वल टू हाउ मेनी 6. F is Faraday's constant 96500 coulomb. E naught cell we have already calculated 0.34 volt. So how can you find out n? N means number of moles of electrons are loss and gain during the oxidation and reduction reaction in a redox reaction. So in this reaction during oxidation 6 mole electron loss किया and during the reduction कितना mole electron gain किया, 6 mole electron gain किया. So n equal to how many, 6. F is Faraday's constant 96500 coulomb or E naught cell standard cell potential. So after the calculation this is equal to 96860 coulomb into volt, and coulomb into volt equal to कितना होता है जोल. जोल को हम लोग किलो जोल में कन्वर्ट कर सकता है. जोल को किलो जोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. देन दिस इज इक्वल टू 196.86 किलो जोल. So this is the
Gibbs energy changes in this electrochemical cell. Now we have to calculate the equilibrium constant. Now we have to calculate the equilibrium constant. So this is the relation E naught cell equal to 0.059 divided by n log Kc. This is the relation to find out equilibrium constant Kc. So for this equation, E naught cell 0.34 volt, 0.059, n equal to how many? 6 mole electrons are involved in this redox reaction, log Kc. Then relation को अरेंज करने से log Kc इक्वल टू 0.34 वोल्ट इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइडेड बाई 0.059. So after the calculation, log Kc equal to 34.57. Then हम लोगों को Kc चाहिए. So Kc इक्वल टू, यहाँ से log हटाने के लिए ऑपोजिट नंबर का एंटी लॉग लेना पड़ेगा. तो Kc इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 34.57. सो एग्जाम में ये एंटी लॉग ऑफ 34.57 का वैल्यू एग्जामिनर सप्लाई करेगा. सो अभी हम लोग यहाँ तक दिखाने से हो गया. सो मेनली ये चैप्टर से नर्स इक्वेशन से न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में एवरी ईयर में. सो दिस नर्स इक्वेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, Nernst equation and determination of equilibrium constant, Nernst equation and determination of Gibbs energy. So with the help of Nernst equation, we can determine cell potential for an electrochemical cell, we can determine equilibrium constant for an electrochemical cell, and we can determine Gibbs energy changes in an electrochemical cell. So Nernst equation is the very important topic of this chapter. Thank you.